विश्वविद्यालय को पारंपरिक पाठ्यक्रम के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, मशीन लर्निंग, डेटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा और रोबोटिक्स जैसे उन्नत क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। ये कहना है राज्यपाल CP राधाकृष्णन का। वे आज संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के 41वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। राज्यपाल CP राधाकृष्णन और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राज्यपाल के साथ ही न्यायमूर्ति भूषण गवई ने छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियों और अवसरों की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। राज्यपाल ने यह भी कहा कि पाठ्यक्रमों को उद्योगों की जरूरत के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, जिससे छात्र न केवल रोजगार योग्य बने बल्कि उनमें सही दृष्टिकोण भी विकसित हो। दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। GS टोपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की छात्रा हर्षाली हटवार ने 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात बोलण्याची संधी दिली। अमरावतीचा भूमिपुत्र असल्याने ही माझ्यासाठी अतिशय सन्मानाची बाब आहे। प्रिय विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी मित्रांनो, आजचा दिवस तुमच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा क्षण आहे। हा क्षण तुमच्या कठोर परिश्रमाचा, तुमच्या जिद्दीचा आणि तुमच्या स्वप्नांचा विजय आहे। या पवित्र मंचावरून तुमचे अभिनंदन करताना मला अतिशय आनंद होत आहे। पदवीदान समारंभ हा केवळ शैक्षणिक प्रवासाच्या समाप्तीचे प्रतीक नाही, तर नव्या जबाबदाऱ्या, नव्या संधी आणि आव्हानांचे दार उघडणारा हा प्रसंग आहे। आज इथून पुढे तुमच्या ज्ञानाचा उपयोग स्वतःच्या आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी कसा करायचा हा निर्णय तुमचा असेल। संत गाडगे बाबांचे विचार आणि त्यांनी समाजसेवेसाठी दिलेले योगदान तुम्हाला सतत प्रेरणा देणारे राहील। Courses should be designed in such a way that they should satisfy the demands of the industry and the modern economic development features should be taken into account. Education should not only make students employable, but they bring right attitude towards work and life in them. Only then the growth of the nation could be achieved with enhanced societal happiness, and a startup ecosystem and incubation centers should satisfy the local industrial demands. Local resources and local talents should be best utilized to ensure sustainable growth of our region. The job of the university is to produce new knowledge. It can only be done through robust research-oriented ecosystem. Teachers and students together can strive hard to ensure that each year we advance ourselves in respective field. I believe we must forge partnerships with foreign universities and try to offer the students innovative programs that meet the demands of the modern world. During my meeting with the ambassador of Italy, the speaker of the Russian parliament, the Japanese consul general, and recently I met the governor of Brazil, I learned that the many countries are in need of skilled professionals in various fields from India, and nothing wrong if we go and work in a foreign soil and get more exposure. There is nothing wrong. Finally, we all will come back. I know that we love our motherland more than anything else. We all come back with more experience and more talent by the exposure, what the experience we are getting in abroad, and we do everything for the development of our region and the nation.